Hello, today we are going to read a new lesson, and I am very happy to welcome you in this new lesson, Julius Caesar, at page number 40. Dear students, the Julius Caesar is a play written by none other than William Shakespeare, the one of the literary giants in the field of English literature. And this William Shakespeare is one of the greatest English playwrights. He was also a poet and an actor. His greatest works has made a great contribution in the field of English literature, and by dint of that he is often called England's national poet. इसको इंग्लैंड का कौमी शायर भी कहा जाता है. And he has written 39 plays so far, 3 long poems and many sonnets. He has a very outstanding contribution in the field of English literature. This man, William Shakespeare, he was born on 26 April 1564 and he died on 23rd April 1616 at the age of 52, and he pertains to the Elizabethan era. One of the famous literary giants of English literature, Ben Jonson, has said about this man, William Shakespeare, that this man, William Shakespeare, is the soul of the age. So he has given the title to this man, the soul of the age. And this play, Julius Caesar, is written by this literary giant, William Shakespeare. There are so many plays. Some plays are comic, some plays they are tragic, and the plays which end with tragedy, they are called tragic plays or tragedies simply. This Julius Caesar, this play is also a tragic play, and we have some famous plays, some tragedies that are written by this great poet William Shakespeare. We have Othello, The Merchant of Venice, Hamlet, Macbeth, Midsummer Night's Dream, so on and so forth. But today we are going to read this play, Julius Caesar. So I would like to give you an account, a brief introduction of this play, Julius Caesar. Dear students, this Julius Caesar, he was a famous hero, a brave soldier, a brave fighter commanding the troops, and he was famous all over the world. As this Julius Caesar one day returned at home, victorious from a prolonged battle, एक लंबी जंग के बाद जो ही वो घर लौट रहा था जीत कर, he was received, he was given a warm welcome by the people of the country, the Romans. He was received with cheer and with great woe. There was a great enthusiasm shown by the people, had given him a lot of respect. But there were certain members of the Senate. As you know, like we are having the parliament here, and we have the parliament members, then the top boss of the parliament is the prime minister. In the same way, they are in the Rome, they were having
the greatest house of legislation, that was called a Senate, like our parliament. So there were certain members in the Senate. That Senate was led by a person that was called Brutus. This is Brutus. He is the chief senator, like we are having the parliament members here. So what happened when they saw that this man, Julius Caesar, after he was returning from a prolonged battle with full victory, and he was given a warm welcome by the people of the Rome. So these senators, along with Brutus, they became jealous of it. उनको इसकी जेलसी हुई, हसद हुआ, and they feared that he is getting more and more popular, and there is a threat to their reputation. उनकी जो reputation थी उस पे आंच आने वाली है, and this man is trying to doze off their reputation and their power in the Senate. So what happened one day, they made a conspiracy. उन्होंने एक साजिश रचाई, and they have plotted against this man Julius Caesar, and finally killed him in the broad daylight. तो आखिरकार उन्होंने इसको दिन दहाड़े कत्ल कर डाला. So there was a great opposition after he was killed by these senators, and finally the revenge was taken, उसका बदला लिया गया, and all these conspirators, they were finally put to death. Now let's start. It is on page number 40. 200 years ago, there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror. 2000 years ago. Yes, students, the story dates back to 2000 years ago, and there lived in Rome. Rome is a country. A great soldier, you know, एक सिपाही, and a leader. He was not only a soldier, but he was also a leader. And who was this man? He was Julius Caesar, famous all over Europe, and he was very famous. His reputation, his fame and name, it was spread all over the continent of Europe. Why he was famous? He was famous as a conqueror, because whenever he was fighting any battle, so he was never being defeated. He always came victorious. हमेशा जीत के आता था. Conqueror means one who always wins the battle, and because of this quality, he was very famous all over the Europe and admired by his people as a national hero. And he was so famous that the people of his country, they admired him. Admire means they praised him. He was becoming very popular, and he has attained the fame to such an extent that now he was regarded as a national hero by the people of the country. Living in Rome at that time was a man named Brutus. Though at that time, when Julius Caesar was considered the national hero of the country, उस टाइम वहाँ पे एक और बंदा रहता था. I just told you that there was living another person, and this is the person Brutus. His name is Brutus. This Brutus, he was also a brave man who had high and noble morals
and was Caesar's dearest friend. This man Brutus, he was very famous also because because of his morals, because he was very noble. He was also a very dearest friend, a very closest friend of this Julius Caesar. So, dear students, I mean to say that this Julius Caesar and this Brutus, they were first friends. They were very close friends. Brutus watched his growing ambition. So when Brutus watched, when he saw that his friend Julius Caesar, that his ambition, ambition means the power, ambition means the power one is acquiring and having a strong desire for success. So when this Brutus saw that Julius Caesar has a strong desire for success, तो उसने क्या किया? Brutus watched growing ambition with great anxiety. तो he became very much anxious. तो वो बहुत परेशान हुआ. उसकी एंग्जाइटी परेशानी वो बढ़ गई उसकी शोहरत देखकर and was troubled with his self importance. तो उसको प्रॉब्लम हो गई कि मेरा क्या क्या होगा. मेरी जो इम्पोर्टेंस थी, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, चीफ सेनेटर था, बहुत नोबल माना जा रहा था. तो जब इसने देखा कि जूलियस सीजर यानी इसका दोस्त जो है उसे सबकत ले जा रहा है, वो आगे जा रहा है, ही इज़ बिकमिंग more and more powerful, more and more popular. So he is being loved by the people. People are regarding him as the national hero. So this made Brutus very anxious and he got troubled. Now he is going to think about his self importance. इसकी जो importance है तो उसको खतरा लगा शायद मैं अब इतना important नहीं रहूँगा मुल्क में, मेरी जो importance है वो कम हो जाएगी. So Brutus and his brother-in-law, Brutus and his brother-in-law Cassius suspected that Caesar might be offered the crown at the national games as there would be thousands of people there. So what happened at this Brutus and his brother-in-law, this Cassius, this is the Cassius. So Cassius is the brother-in-law of Brutus. So both of them, they got very tense, they got very much anxious. So they suspected, तो उनको शक हुआ that Caesar might be offered the crown, कि Caesar जो है इसको इसको पेश किया जाएगा, उसको ऑफर दी जाएगी. The crown, crown means ताज, means the kingdom. Here the crown means kingdom, यानी आप बादशाह उसको वो देने जा रहे हैं. At the national games, उन दिनों वहाँ पे नेशनल गेम्स खेली जा रही थी. तो जो कि नेशनल गेम्स पे लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद होती है एज स्पेक्टेटर्स, वैसे तमाशाई. तो इतने बड़े हुजूम के सामने जब इस जूलियस सीजर को ये ऑफ़र दी जा रही है that he is going to become the king of the country, so he is being offered by the crown, and that too at the national games, where the national games were played, as there would be thousands of people. वहाँ पे हजारों लोग होंगे. तो कैसिस was a member of Roman party. तो कैसिस जो था वो रोमन पार्टी का एक मेंबर था. It was one of the political parties there. वो उसका मेंबर था. Cassius was a member of the Roman party which did not wish Caesar to be made king. वो नहीं चाहता था या वो पार्टी नहीं चाहती थी कि इस मुल्क का बादशाह जो है वो सीजर बने. तो यहाँ पे पता चलता है दैट ब्रूटस को भी टेंशन हो गया. तो यहाँ पर इसका जो ब्रदर इन लॉ है कैसिस, तो वो भी नहीं चाहता था. तो द
द फ्रेंड ऑफ एन एनिमी इज ऑल्सो एन एनिमी, दुश्मन का दोस्त वो भी दुश्मन होता है। तो अब ये दो बंदे, फ्रूट्स एंड दिस कैसीज, नाउ दे हैव द कॉमन इंटेंशन, दोनों का एक ही मकसद है अब कि दिस मैन, दिस जूलियस सीजर शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द सीन, इसको सीन से हटाना है उनको। एंड व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। Cassius was a member of Roman party which did not wish Caesar to be made king, and he had been sent by his companions to persuade Brutus to join them. So what happened? जो इसके साथी थे, इस कैसिस के साथियों ने कैसिस को भेज दिया ब्रूटस के पास। उन्होंने उसको कहा कि आप ब्रूटस के पास जाओ। तो वहाँ पे उसको परसुएड मीन्स टू मनवाना, कायल करना, PERSUADE, परसुएड, उसको आप मनवाओ, टू जॉइन देम, कि वो भी हम में शामिल हो जाए, कि उसके ऐसे जॉइन एंड बिकम देयर लीडर। तो हम उसी को इस मुल्क का जो क्राउन है वो पेश करेंगे, यानी उसको किंग बनाएंगे। सो कैसी स्टार्टेड to poison Brutus' mind against Caesar. क्योंकि Brutus जो था, I told you in the beginning that he was the first friend of this Julius Caesar. Both of them were very close friends. So when this Cassius, when he was sent by his companions, अपने साथियों ने जब उसको भेजा ब्रूटस को फंसाने के लिए, एंड उसको लालच दी गई कि आपको ही हम बनाएंगे इस मुल्क का बादशाह। तो कैसिस ने अब क्या किया? ही स्टार्टेड टू पॉइजन ब्रूट्स माइंड। पॉइजन मीन्स यहाँ पे इसको एज वो भी इस्तेमाल किया, ही स्टार्ट्स टू पॉइजन। अब इसने जहर घोलना शुरू किया ब्रूट्स के दिमाग में, अगेंस्ट सीजर के खिलाफ, जो कि उसका दोस्त था। वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट? तो इसने उसको ऐसे कहा, कैसिस अब ब्रूटस से ये कह रहा है कि वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, वो इतना अपने बारे में क्यों सोचता है कि वो इतना ग्रेट है, इतना महान है। आई वॉज बोर्न एज फ्री एज सीजर, मैंने भी उसी तरह जन्म लिया है, एक आज़ाद बंदे के नाते, जिस तरह सीजर एक वैसे एक आज़ाद हो, कोई गुलाम नहीं है। एंड आई एम नॉट ऑल्सो ए स्लेव, मैं भी कोई नौकर नहीं हूँ। आई वॉज बोर्न फ्री एंड सीजर वॉज, सो वेर यू। तो इस तरह आप भी उसी के बराबर हो। ही इज़ नॉट सुपीरियर टू वी पीपल, वो हमसे बड़ा नहीं है, वो हमसे बढ़िया नहीं है। वी बोथ हैव फेड एज वेल, तो हमें एक साथ पाला गया है। And we can both endure the winter's cold, और हम भी इतने ही बहादुर हैं। Endure means बर्दाश्त करना। We can bear the cold of the winter as well as he, जैसे वो बर्दाश्त करता है। तो we are equally brave. We have the same guts. We have the same qualities. हम में भी वही क्वालिटी है। There is no difference. But this man is now become a god. अब ये जो बंदा है, यानी ये जूलियस सीजर, अब ये भगवान बनने लगा। I have often thought about these things, Brutus answered. तो ब्रूटस ने कहा कि मैं भी अक्सर ये सोचता था। केस का another member of कैसिस पार्टी, केस का एक और मेंबर है कैसिस के अलावा, केस का इसका नाम है, तो ये भी एक मेंबर है कैसिस की पार्टी का। had been at the games, तो वो भी वहाँ पे था। He told them that Mark Antony, another famous soldier and friend of Caesar, तो इसने इनको कहा कि जो मार्क एंटोनी है, मार्क एंटोनी वो भी बहुत मशहूर सोल्जर था,
एंड फ्रेंड ऑफ सीजर, और जूलियस सीजर का दोस्त भी था, had offered the crown 3 times to Caesar. इसने उसको बादशाह 3 बार उसके सामने पेश कर दी. Every time Caesar had refused it. लेकिन तीनों बार सीजर ने उसको लेने से इनकार कर दिया, उसे मना कर दिया. तो but each time he had been slower in the refusal. लेकिन तीनों बार जब वो इनकार कर रहा था, लेकिन उसका इनकार जो था इसमें उतन मतलब वो एक स्लोपन था. तो जिसका ये हम माने निकाल सकते हैं कि ही वॉज विलिंग टू टेक द क्राउन, वो बादशाह लेने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा रेस्पॉन्स वो नहीं दिखा रहा था कि एज इफ ही वॉज टोटली नॉट विशिंग टू टेक द क्राउन. तो जो इसका स्लो रेस्पॉन्स था, इससे पता चलता है कि शायद वो अंदर से चाहता है कि मैं बादशाह बनूं. Casca was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. तो कैस्का ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर सीजर को अब चौथी बार गेम्स के दौरान, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पे गैदर हो चुके हैं, अगर अब चौथी बार मार्क एंटोनी जो है इसको बादशाह बनने की पेशकश करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अब की बार वो इनकार करेगा. आई एम श्योर, मुझे पक्का भरोसा है दैट ही वुड एक्सेप्ट इट, कि वो इस बार बादशाह कबूल करेगा. सो डेफिनेटली ही वुड बिकम द किंग एंड वी हैव टू वर्क अंडर हिम, हमें उसके मातहत फिर काम करना होगा. नाउ ऑल दीज पीपल, मार्क एंटोनी, दिस ब्रूट्स, Casca, Cassis, and all other senators. Now they are trying to hatch a plot. वो एक साजिश जो है वो उसको तरकीब दे रहे हैं against Julius Caesar. They all fear that Julius Caesar should be eliminated. इसको तो हटाना चाहिए. He should be killed. Now they are now trying to make a plan, and let's see what happens. Brutus went home greatly disturbed in mind. So we have just read that this man, this Cassis, who is brother-in-law of Brutus, as he was sent by his comrades, by his companions, to poison the mind of Brutus. So he did the same. तो इसने वैसा अपना काम कर डाला. तो इसने ब्रूट्स के दिमाग में ये सब बातें डाली अपने दोस्त के खिलाफ. तो जब ही ब्रूट्स व्हेन ही वेंट होम, जब वो घर पहुंचा, जब वो घर गया, ग्रेटली डिस्टर्ब, तो घर पहुंचते ही वो बहुत डिस्टर्ब हो गया, इसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इसमें तो जहर घोल दिया था कैसीज के बातों ने. ही कुड नॉट स्लीप. तो क्या हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट, तो वो सो नहीं पाया, उसकी नींद उड़ गई. He wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. तो वो परेशान है, हैरान है, अब मैं क्या करूं. How Caesar could be cured. इसका इलाज मैं कैसे करूं, सीजर का इलाज. Of his proud, इसका घुमंड जो है, फखर जो है, गरूर जो है, एंड एम्बिशियस ग्रीड, और इसकी जो जो चाहत है, जो लालच है शोहरत पाने की, तो इसका इलाज कैसे किया जाए. तो इस सोच, ये जो है ना, द थॉट fixed so firmly into his mind that he is not able to sleep. उसकी तो नींद ही उड़ गई. It must be by his death. तो अब ये सोच रहा है, क्योंकि नींद भी उड़ गई, तो इसने फाइनली ये सोचा कि इसका एक ही इलाज है. There is only one cure, there is only one remedy, एक ही इलाज है, that is the death, वो है मौत. तो इसको मारने के बगैर कोई चारा नहीं है. He at last decided sadly. तो क्योंकि वो इसका दोस्त भी था, तो आखिरकार इसने डिसाइड कर दिया. He has taken the decision, but very sadly, बहुत ही उदास था, मायूस था. We could
We could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. We could never be certain, हमें कोई भरोसा नहीं है, how Caesar might act, Caesar क्या करेगा if he gained absolute power, अगर इसको absolute power होगा, absolute power जो है कंट्री का वो बादशाह के पास होता है, तो if he would become king, तो वो फिर क्या करेगा, उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, तो वो हम उसके बारे में सर्टेन नहीं है, वो कैसा रहेगा हमारे और ठीक भी रहेगा, खराब भी रहेगा। तो जब वो एब्सोल्यूट पावर में आएगा, फाइनल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री उसके पास चली जाएगी, तो व्हाट एंड हाउ इन व्हाट मैनर ही वुड बिहेव, दैट नाउ दे आर नॉट सर्टेन। In the middle of the night, so it was in the midnight, these Cassis, Casca, Dix, and other members of their party came secretly to see Brutus. Now in the middle of the night, यानी आधी रात, ये तीनों बंदे निकल गए और बाकी मेंबर भी उनके साथ थे। इसमें कैसीस था, कैस्का था, डिक्स था और बाकी कुछ मेंबर्स। सो वो मिलने आए ब्रूट्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रूट्स जो है उसकी नींद भी नहीं है, उसकी नींद जो है वो उड़ चुकी है। नाउ ही हैज़ कम टू द कंक्लूजन, उसको इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि देयर इज़ नो रेमेडी, सिर्फ इस सीजर को सिर्फ एक ही इलाज है, दैट ही इज़ टू बी किल्ड, उसको मारना है। अब ये भी आए कॉन्स्पिरेटर्स, ये जिन्होंने साजिश बनाई थी, वो ब्रूट से मिलने आए इन द मिडनाइट, नसब रात के दौरान। टुगेदर दे डिस्कस्ड देयर प्लान्स, तो उन्होंने मिल बैठ के, वो ब्रूट्स के पास आकर आपस में मिल बैठ के उन्होंने प्लान्स जो है वो प्लान्स डिस्कस किए। सीजर वाज टू बी किल्ड द नेक्स्ट डे, तो प्लान जो उन्होंने बनाया उसके मुताबिक नेक्स्ट डे जो आने वाला दिन था, अब इनको मारना है। उन्होंने यही प्लान बनाया कि हम जूलियस सीजर को मार डालेंगे एट द कैपिटोल, एंड कैपिटोल इज़ द टाउन हॉल वेयर द मीटिंग वाज एग्जीक्यूटेड, जहाँ पे मीटिंग का इनेकाद किया गया था, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटोल। हैव ए लुक हियर, दिस इज़ the picture of Capitol, the town hall. Now, there would be all the senators, and in the crowd, they are now going to kill Brutus. So now the same has been planned, where he was going to take a speech to the people. क्योंकि यहाँ कैपिटोल में, इस टाउन हॉल में जूलियस सीजर को लोगों से खिताब करना था, he was going to make a speech, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी लोगों की, सेनेटर्स भी वहाँ पे होंगे। they wanted to kill मार्क एंटोनी too, और उन्होंने अब ये भी प्लान बनाया कि जब वो जूलियस सीजर को मारेंगे तो उसके बाद वो मार्क एंटोनी को भी मारेंगे। बट ब्रूटस वुड नॉट परमिट दिस, लेकिन ब्रूटस ने इनको ये मशवरा कबूल नहीं किया, इसने ऐसा नहीं माना। क्यों नहीं माना? एंटोनी इज बट ए लिम्ब ऑफ सीजर, ही सेड। तो ब्रूटस ने इनको कहा कि एंटोनी जो है, जो मार्क एंटोनी है, वो जूलियस सीजर का समझो एक लिम्ब है। लिम्ब मीन्स ऑर्गन, जैसे हमारी आर्म या लेग, तो ही इज द राइट हैंड और लेफ्ट हैंड और वट एवर भी से, या हार्ट, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि इसने बोला कि एंटोनी जो है वो इसका एक ऐसा है, जिस्म का एक अंग है। He said he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. तो ये एंटोनी क्या करेगा अपने इस बाजू से, जब सीजर का जो हेड है, जब हम इसको जुदा करेंगे उसके जिस्म से, when we will chop off the head, when we will cut the head off of the Caesar, so this Mark Antony will be rendered futile. He will get paralyzed, he will get fatal, and he can't do anything. So it is no use to kill him. तो अब इसको मारने का कोई फायदा नहीं है। जब हम सीजर को मारेंगे तो ये खुद ब खुद मरेगा।
He shook his head and spoke with great urgency. तो उसने सर हिला के बड़ी तेजी से मजबूरी में मजबूरी में उसने कहा, क्या कहा? I wish we could cure Caesar's ambition without killing him. मैं चाहता हूँ कि हम सीजर की जो ये लालिश है शोहरत की, हम इसका इलाज करेंगे विदाउट किलिंग हिम, उसको मारने के बगैर। बट आई डाउट, लेकिन मुझे शक है, इफ दैट इज पॉसिबल सो सीजर मस्ट डाई, अगर ऐसा हो जाएगा तो सीजर को मरना ज़रूरी है। बट फ्रेंड्स, लेट्स किल हिम ब्रेवली, लेकिन दोस्तों आप चूँकि हमने प्लान बनाया है, जब हम इसको मारेंगे तो उसको बड़ी बहादुरी से मारना, नॉट एंग्रीली, गुस्से में नहीं। वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन आवर हार्ट्स, हमें पहले ही बिटरनेस जो है हमारे दिलों में, तलखी जो है इसके खिलाफ, उसका इजहार नहीं करना है। वी हैव नॉट टू एक्सप्रेस द बिटरनेस अगेंस्ट हिम, वी हैव नॉट टू ब्रिंग ऑन आवर फेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जो करने जा रहे हैं इसका इम्प्रेशन हमें अपने चेहरों पर, अपनी बॉडी पे नहीं लाना चाहिए। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट ओनली सीजर शुड डाई, अब यही डिसाइड हुआ फाइनली कि सिर्फ सीजर ही मरना चाहिए वहाँ पे, मार्क एंटोनी जो है इसको नहीं मारना है। सो व्हाट हैपन इज द नेक्स्ट डे, दैट्स ऑल एंड वी विल सी इट टुमारो। ओके।